So good afternoon, all of you. This is Vipul, and we are discussing hypothesis testing. We are learning how to test the hypothesis, whether that particular hypothesis is true or false. And in previous session, we've gone through some of the basic terms related to this particular unit, that are hypothesis. What we mean by hypothesis: hypothesis means a claim that we want to test or investigate with the help of the data, sample data. That hypothesis is divided into two parts: null hypothesis and alternative hypothesis. Which kind of hypothesis is known as a null hypothesis? The currently accepted value of the parameter will lead us towards the null hypothesis, or in other words, we can say that the null hypothesis is the hypothesis which is tested for the possible rejection under the assumption that it is true. So we need to accept some of the things, one of the statement regarding to that particular sample data, and we will consider that particular as a null hypothesis. The notation for the null hypothesis will be H nod, and the exactly opposite hypothesis to the null hypothesis will be known as an alternative hypothesis, or the synonym for that is research hypothesis. The notation for that will be H1 or HA. That H1 or HA, that small a stands for the alternative hypothesis. That is just a notation. So कोई भी notation हो सकता है, don't worry about that. And what is alternative hypothesis? This is exactly opposite of the null hypothesis, or in other words, we can say that it is complementary to the null hypothesis. Any hypothesis which is complementary to the null hypothesis is called the alternative hypothesis. It involves the claim to be tested. The claim which we want to test, which we want to investigate, that will be involved in this particular hypothesis. The labeling will be H1 or HA. Okay, and we need to note one more thing, that the null and alternative hypothesis are two mutually exclusive statements. Both are mutually exclusive statement. उसमें कुछ common नहीं होगा. If we're going to take the intersection of both that statement, then we will have a null set. Is it? As we know that what we mean by mutually exclusive events, we can say that A and B are mutually exclusive if the intersection of both that events, that the outcome related to both that events is a null set. Intersection of both that set is null set. Then we can say that both that events are mutually exclusive. Like that particular way. Here, null and alternative hypothesis will be two mutually exclusive statements. Okay, and in other words, we can say that they are mathematical opposite of each other. They will be mathematical opposite to each other. Okay, and उसके बाद हमने ये एक example छोटा सा देखा था जिसमें we tried to create a null hypothesis, alternative hypothesis. What was that example? That वो बहुत जल्दी से हमने डिस्कस कर लिया था. चलिए एक बार फिर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं. So we are starting a session from this particular. Just give me 1 minute so I can off the fan, तो मैं ठीक से आप लोगों को सुन सकूं. Okay. Let's deal with this example, and let's try to create null hypothesis, alternative hypothesis. किस तरीके से बनाए एक बार समझ लेते हैं. From the past data, it is known that the average weight of ME student is 55 kg. We are having some of the data of the previous year, and we are having one of the statement in our mind that the average weight of ME student, our student, is 55 kg. But the sports faculty claim that, a sports faculty is going to claim that the average weight of ME student is no longer 55 kg. वो ऐसा बोल रहे sports faculty that now onwards now the recent students, मारवाड़ी के जो भी स्टूडेंट है उसका जो वेट है उसका एवरेज अभी 55 kg नहीं है. वो ये नहीं बोल रहे कि ज्यादा है कम है. They are just saying it is no longer 55 kg. So might be it will be less than 55 or it will be greater than 55. So वो इंफॉर्मेशन हमारे पास अभी नहीं है. बट अगर इस डेटा से अगर हमको नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करनी है तो कैसे करेंगे? द करंटली एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ द मीन. अभी जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? एमयू स्टूडेंट के वेट की. इज इट? और उसके लिए एक हमारे दिमाग में हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है
कि that mean of that weight is 55 kg. Now, we are dealing with the population, so population mean will be labeled as a mu. So that will be a null hypothesis. Null hypothesis is H naught, जिसको हम बोलेंगे mu is equals to 55 kg. अब mu क्या है? ये mu है mean of the weight किसका? mu student का. So this is currently accepted value. Is it? ये अभी हम लोग मान के चल रहे हैं. But the claim which we want to test, स्पोर्ट्स फैकल्टी ने कुछ क्लेम किया. क्या क्लेम किया? That it's no longer 55 kg now. वो जो मीन है ना, अब 55 kg नहीं है. So my alternative hypothesis will be exactly opposite to this. इस null hypothesis से exactly mathematical opposite होगा. वो बोल रहे थे कि म्यू की वैल्यू 55 kg है. स्पोर्ट्स फैकल्टी बोल रहे हैं म्यू की वैल्यू 55 kg नहीं है. Is it? So that will be my alternative hypothesis, or I can say the research hypothesis. We can label that as H1. So H1 will be mu is not equals to 55 kg. अब इसमें और दो रास्ते हो सकते हैं. We can consider like this. हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि mu is less than 55 kg and mu is greater than 55 kg. But ये कब हो सकता है? That for that इसमें कुछ information अलग तरीके से दी होगी डेटा में. Then we will be choosing this. और एक बात यहाँ से याद रखना है आपको, if we are dealing with any of that less than or greater than के साथ deal कर रहे हैं ना, then we will be dealing with the, and surely we will be dealing with the one tail test. But when I'm dealing with this kind of mu is not equals to 55 kg, then you guys will be dealing with the two tail test, is it? But वो क्या है, one tail test क्या है, two tail test क्या है, वो अभी आएगा next slides में. ठीक है. So here the possible outcome of this stats, यहाँ पे result क्या हो सकता है when we are going to check this particular claim. जब हम इसको टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट करने के लिए कुछ हथियार है हमारे पास. We are having some of the techniques to test whether that alternative hypothesis is correct or not, whether that null hypothesis, we're gonna accept that null hypothesis or we're gonna reject that null hypothesis. उसके लिए कुछ टेस्ट है हमारे पास, उसकी तरफ आगे जाएंगे. बट रिजल्ट क्या हो सकता है? We are having only two results. There are only two possibilities over there. Either we will reject the null hypothesis, या तो हम इसको reject कर देंगे. We're gonna reject this null hypothesis. Let me read some of the first one. Either we will be rejecting this null hypothesis, कि नहीं भाई ये गलत है, इसको reject कर दो, or we will fail to reject this null hypothesis. That means we will accepting this. We'll be accepting this. So दो ही possibility हो सकती है, या तो हम null hypothesis को accept करेंगे या तो reject करेंगे. और एक्सेप्ट करने को यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैंने लिखा है, देखिए. We will fail to reject, that means we have to accept. We will fail to reject, that means we have to accept the null hypothesis. ठीक है. So this will be the only possible outcome for each and every test which we are going to learn in this particular unit. Okay. So let me take you further about some of the different concepts related to that. The two-sided and one-sided hypothesis. As I said earlier, here that I can express this particular, yes, I can express this particular hypothesis in this way also. Mu is less than equals to 55 or mu is greater than equals to 55. तो कब हम mu is not equals to 55 not equals to को यूज करेंगे, कब less than greater than के साथ डील करेंगे? So let's try to understand that, and then we will be loaded for the first test of this particular unit. So what is two-sided and one-sided hypothesis? The alternative hypothesis can be two-sided or one-sided. Observe the alternative hypothesis. यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो alternative hypothesis की बात कर रहे हैं. हमारी alternative hypothesis या तो two-sided होगी या तो one-sided होगी. That based on the data, but कब हम लेंगे two-sided alternative hypothesis? उसका मतलब क्या है, उसमें क्या होता है? देखिए, two-sided alternative hypothesis is also known as a non-directional hypothesis. उसमें कुछ direction की बात नहीं हो रही. We're just interested कि is greater than or less than, sorry, equal to or not equal to. Okay, it is used to determine whether the population parameter is either greater than or less than the hypothetical values. We use that.
कोई कमेंट डाल रहा है? नहीं मुझे दिखाई दे रही. Yes sir, up to when we will get the Aditya, can you unmute yourself? Aditya Jha, unmute yourself. Aditya Jha, are you there? Aditya Jha. Aditya, kindly unmute yourself right now. It's totally fine, but are you attending the session or not? Aditya, unmute yourself. If you are outside the home, then that means you are not attending the session. Then I need to kick you out from the session. My question is that, are you attending the session? Last 3-4 सेकंड के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. If you are not in position to reply, then I need to. Safely mute yourself. Safely mute yourself. Safely. Safely. प्रीता सैफ अली ने कॉल કરીને કે ભાઈ I'm not the organizer, so मैं उसको म्यूट नहीं कर पाऊंगा. Yes, sir. जल्दी से बोल उसको. पर्सनल अकाउंट होई नु एजिन के हैं. चलो पर्सनल अकाउंट बा, मोबाइल नंबर बा, ऐसा नया सिम लेके नया मोबाइल नंबर डलवा दो अकाउंट में. सिम लेके चल जाए ना, मैसेज है ना कुछ. तब उनको पैसा पहले करवा सकते. Guys, we need to wait for little. जब तक वो अपने आप को म्यूट नहीं करेगा, we can't move further. Give me 1 minute. Let me take ownership of this particular. Aditya, are you there? Then unmute yourself. I need to do one thing. At the end of this particular session, you're gonna make a call to me, okay? We need to talk. Okay, the simple instruction to all of you: when we are discussing some of the things, you don't need to ask any of the silly question like that. So when will be the marks of midsem will be there, okay?
Aditya, if you're interested in this particular hypothesis testing, then and then you are supposed to be over here, else you may leave the session right now, okay? So I'm not gonna entertain any of such question during the session. वो आप बोल सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं when we are ending the session or when we are starting the session, तब बात होती है हमारी. Is it? Good. So hopefully you are clear. Okay. Sorry for the disturbance. So as we said that in a previous example, alternative hypothesis was mu is not equals to 55 kg, as that sports faculty claimed that no longer now the weight of MU student is no longer 55 kg. So we were just interested. We had just constructed alternative hypothesis as mu is not equals to 55. In that case, हो सकता है कि अगर म्यू की वैल्यू 55 से बड़ी है तो भी वी आर गुड, म्यू की वैल्यू 55 से छोटी है तो भी वी आर गुड. इसमें हमको सिर्फ ये देखना है कि म्यू 55 नहीं है, उससे कम है, बड़ी है, वी आर गुड विद एनी ऑफ दैट, वी आर गुड विद एनी ऑफ दैट. इन दैट केस वी आर नॉट वरीड अबाउट द डायरेक्शन. देखिए यहाँ पे लिखा था नॉन डायरेक्शनल, दिस इज नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, माने कि वो 55 से छोटी है तो भी फर्क नहीं है. दैट मींस 55 से राइट हैंड साइड में है या लेफ्ट हैंड साइड में है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. बस हमको ये देखना है कि वो 55 नहीं है, छोटी है तो भी चलेगा, बड़ी है तो भी चलेगा. बट व्हाट इज वन साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? इसमें डायरेक्शन की परवाह करेंगे हम. we'll be looking, we will be interested to know whether it is less than 55 or whether it is greater than 55. So ये क्या होता है, चलिए देखिए. It is also a directional hypothesis, one-sided hypothesis जो हम कंस्ट्रक्ट करेंगे. It is also known as a directional hypothesis. हम डायरेक्शन की पूरी केयर करेंगे वहाँ पे. It is used to determine whether the population parameter differ from the hypothesis value in specific direction. उससे कम या बड़ी. Is it? We will be interested in one of the specific direction only. या तो उसको उससे कम है या तो बड़ी है, उस दोनों में से किसी एक में इंटरेस्टेड होंगे. यहाँ पे देखिए इस टू साइडेड में बड़ी है तो भी वो 55 से जो हमने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाई थी, म्यू इज नॉट इक्वल टू 55, वी आर गुड विद दैट. छोटी है तो भी वी आर गुड विद दैट. पर यहाँ पे विल बी इंटरेस्टेड इन वन ऑफ ओनली इन द सिंगल डायरेक्शन, या तो छोटी या तो बड़ी. इन द प्रीवियस एग्जांपल, if we had constructed a hypothesis as mu is greater than 55, then mu is greater than 55. अगर वो क्लेम उसका ऐसा होता कि नहीं भाई, स्पोर्ट्स फैकल्टी अगर ऐसा क्लेम करता कि भाई अभी जो बच्चे है उसका वेट, उसका मीन, वेट का मीन 55 से तो बड़ा ही है भाई. if this will be his, this was his claim, इस तरीके का क्लेम अगर होता तो हम ऐसे लिखते mu is greater than 55. Is it? So that purely based on the data we are having. जिस तरीके का डेटा है हमारे पास, जिस तरीके का इंफॉर्मेशन दिया हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वन साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर टू साइडेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कंस्ट्रक्ट करेंगे. बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने में बीच में वो थोड़ा सा डिस्टेंस आ गया फ्रॉम द सैफ अली साइड एज वेल एज आदित्य साइड. सो लेट मी नो इफ यू आर हैविंग एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस. लेट मी इरेज सम ऑफ द अनवांटेड थिंग फ्रॉम द स्लाइड. बताइए अगर इसमें कोई डाउट है तो जल्दी से. आई एम गिविंग यू जस्ट 1 मिनट. Aditya, you don't need to say sorry for that. It's okay, totally fine बेटा. बट वो या तो लेक्चर से पहले पूछो बेटा, या तो फिर लेक्चर के बाद. बीच में मत पूछो ना. इसके क्वेश्चन पूछे, इसके डाउट पूछ जो हम एक्सप्लेन करें. सो लेट मी नो इफ यू हैविंग एनी डाउट. अगर नहीं है देन यू नीड टू एक्नॉलेज ओवर द चैट बॉक्स क्विकली कि वी आर गुड. All those who are attending the session will reply on the chat box right now whether you are having any doubt or you guys are clear with this particular. Smriti is saying clear. Mohammed is clear. Good. Let me move further. None of our hypothesis test is gonna be perfect. जितने भी टेस्ट हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने वाले, none of the tests will be perfect. There will be chances for the error, and there are two spatial error which will be generated over this chapter. कौन सी है? That is type 1 error and type 2 error. Now कब आएगी type 1 error, कब type 2 error generate होगी, चलिए वो देखते एक बार. So as I said that no hypothesis test is 100% accurate.
all the tests are based on the probability, and we guys are good. जब भी probability के साथ बात होती है तो there are lots of chances for the error. So all the tests are based on the probability, so there are always chance of error. For the hypothesis test, there are two types of error. दो तरीके की error generate हो सकती है. अब कौन सी दो error? Yes, let me pick my pen. Yes. If suppose H node, now we guys are a little bit clear with some of the notation H1 and H0 or HA. If I'm using any of this notation HA or H1, I'm talking about the alternative hypothesis. If I'm using this notation H node, that means I'm dealing with the null hypothesis. Okay. Suppose my null hypothesis is true, and we will gonna accept that null hypothesis. Null hypothesis is true, and we are going to accept that. Then this is totally okay. कोई error नहीं है. Decision is correct. But if a null hypothesis is correct, true, and we are going to reject that null hypothesis, there are chances कि वो null hypothesis सही होने के बावजूद भी we gonna reject that. If null hypothesis is true, and if we are going to reject that null hypothesis, then surely there is an error, there is a mistake, and this kind of error is known as a type 1 error. Let me explain this once again. Suppose we had constructed one of the null hypotheses, which is true. We are knowing that is true, and if we are going to accept that, वो सही है, and we are accepting that, then there is no issue. कोई error नहीं है, the decision is correct. But if a null hypothesis is true and we are going to reject that null hypothesis, वो सही है, फिर भी हम reject कर रहे हैं. In that case, surely there is some error, and this kind of error is known as a type 1 error. So मैं पूछ सकता हूँ आपको, there might be a question in the examination that what we mean by type 1 error, what we mean by type 2 error. So type 1 error means when null hypothesis is true and we are going to reject that null hypothesis. Then the error is known as type 1 error. And the second type 2 error. If null hypothesis, the null hypothesis which we have constructed, it is already, we are knowing that it is false, and we are going to accept that. And we are going to accept that. गलत है, फिर भी हमने accept कर लिया, तो गलती है, error ही मिलेगी. Then जो भी error generate हो रही है उसको हम बोलेंगे type 2 error. Is it? So if null hypothesis is false and we are going to accept that, then it will create error, and that error will be known as a type 2 error. अगर null hypothesis गलत है, हम उसको reject कर रहे हैं, तो कोई error नहीं है. In that case, decision is correct. Are we good? आई बात समझ में? देखिए, this is important. सही है और उसको reject करेंगे. Both this will generate an error, and this type of error is known as a type 1 error. If H naught is false, and we are going to accept that H naught, then both this situation will generate type 2 error. Is it? Are we good with this? Good. Yes, please. Yes, So what Preeti. probability equals to 1 minus infinity? That is not infinity, that is 1 minus alpha. That is what I am going to explain. So that alpha is a level of significance. Okay. But alpha is the level of significance which we set for the hypothesis test. If I'm setting my level of significance as 5%, means that we are making type 1 error 5 out of 100 times. If my level of significance is 5%, then it means I'm good if I'm committing error 5 out of 100 times. अगर 100 में से 5 बार अगर मैं mistake कर रहा हूँ, then I am good with that. I'm good with that. If I'm setting my level of significance with 1%, then 100 में से अगर एक बार भी गलती है, then it is okay. If I'm setting my level of significance up to 10%, then I will allow 10 error
10 times out of 100 times, it will be good. That will be okay. वो हमने पहले से डिसाइड करके रखा है. अब that now surely there will be a question in your mind, what is level of significance. If you guys remember D2D को छोड़ दो, पर जो रेगुलर बच्चे हैं, we had discussed one of the example when I was delivering the normal distribution, that वो एक question लिया था. Let me pick my screen. कोई एक example हमने लिया था that बालाजी वेफर का एक wafer and gold biscuit. Suppose one of the company is producing a chips packet, another company is producing a gold biscuit. तो यहाँ पे अगर 10% error है उसके production में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर यहाँ पे अगर 1% भी error है ना, then that will create a lots of issue, is it? So this is what the level of significance is. इस तरीके से कुछ डिसाइड करेंगे, पर let me take you further for that कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ. पर अभी ये देखिए, alpha is what? Alpha is called the level of significance which we set for the hypothesis test. But mostly क्या होगा, you will be not deciding the level of significance for any of the example. That level of significance will be provided for all the questions, and usually that value of alpha, which is the level of significance, या तो वो 1% होगा, या तो वो 5% होगा, या तो वो 10% होगा, for any of our question which we are going to deal. And each and every time that value of alpha will be provided to you. अगर नहीं दिया हुआ, if value of alpha is not given, if the value of alpha is not given, then we will consider it as a 5%. अगर नहीं दिया हुआ ना तो हम उसको 5% कंसिडर करते हैं. क्या है, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको, समझाता हूँ कि वो क्या है. As we discussed, that possible outcome for any test, either we can reject the null hypothesis or we will accept. That means we will fail to reject the null hypothesis. Now the question is how to do it. कैसे करेंगे ये, कैसे होगा, कैसे हम कब नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे या तो फिर रिजेक्ट कर देंगे, ये होगा कैसे. उसके लिए कुछ तो, जैसे हमने बोला था कि कुछ हथियार है हमारे पास. वी आर हैविंग सम ऑफ द टेक्निक्स. क्या है, we need to compare that we need to deal with one of the statistic जिसको हम बोलेंगे Z statistic. अब ये हर एक टेस्ट के लिए अलग होगा. If we are dealing with the normal test, if we are dealing with mean, if we are dealing with the proportion, if we are dealing with the standard deviation, या तो फिर coefficient of correlation, हर बार एक test statistic हम decide करेंगे. What is that test statistic? A test statistic is a random variable which is calculated from the sample data. It is used to determine whether to reject the null hypothesis or not. Whether to reject the null hypothesis or not. तो null hypothesis एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है, वो डिपेंड रहेगा टेस्ट स्टैटिस्टिक पे. और ये टेस्ट स्टैटिस्टिक हर एक टेस्ट के लिए डिफरेंट होगा, हर एक टेस्ट के लिए ये डिफरेंट रहेगा. अब क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, चलिए दिखाऊं. Different tests use the different test statistic based on the probability distribution. Based on the probability. तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट स्टैटिस्टिक कैसे डिसाइड करना है. We guys gonna use Z for that stat. Suppose अगर हम नॉर्मल डेटा के साथ बात करें, then that statistic will be known as a Z. उसकी एक ही फॉर्मूला है, उसकी जनरल फॉर्मूला एक यही होती है, that is T minus E of T divided by standard error related to that particular statistic. I had not included this particular formula in any of the PPT, but this is the general form of test statistic. क्या है अब उसमें, चलिए थोड़ा इसके बारे में बता दूं मैं आपको कि ये टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या है. सपोज वी आर डीलिंग विद द वन ऑफ द सैंपल जिसमें बात हो रही है मीन की. जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल वो देखा स्पोर्ट्स फैकल्टी वाला. The sports faculty claims that now no longer the mean of weight of any student is 55 kg. In that particular question, we are dealing with the average value of weight. That means average value of weight. That means we are dealing with the mean of
that sample, that sample जो भी है बच्चों का जो जिसकी भी बात हो रही है, एमए स्टूडेंट की बात हो रही है, बट यूजुअली वी आर डीलिंग विद द मीन. हमको पता है वो सैंपल के जो कांस्टेंट होते हैं, सैंपल का मीन है या तो फिर सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है या तो फिर सैंपल के रिलेटेड प्रोपोर्शन वैल्यू है, ऑल दैट आर नोन एज अ स्टैटिस्टिक. अब वो सारे सैंपल स्टैटिस्टिक को एज अ लीडर में टी से डिनोट कर रहा हूँ. यहाँ पे देखिए, दिस इज द टी. सो व्हाट इज टी? उसकी एक्चुअल वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू, and I will find its standard deviation related to that particular statistic. And using this formula, we will be constructing a formula related to Z statistic. वो Z statistic की formula हर बार बनाएंगे. Now this is just the general form, T minus E of T, that E of T means the estimated value of that parameter. SE stands for the standard error in that parameter. Now standard error means वो last slide में मैंने last lecture में मैंने बोला था, standard error means standard deviation related to that parameter. Standard deviation कैसे निकालना है वो भी मैंने सिखाया था एक क्वेश्चन के साथ, एक एग्जांपल के साथ, ठीक है. But usually we will be constructing our formula using this formula. पर अभी के लिए शायद नहीं पता चल रहा है आपको कि वो how I'm gonna use that Z equals to ET minus E of T divided by standard error related to that T. Then wait, don't worry, अगर नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट पीपीटी में. सो डोंट वरी, बट दिस इज जस्ट जनरल फॉर्म ऑफ दैट, जो मैंने किसी पीपीटी में इंक्लूड नहीं किया क्योंकि आपको जरूरत नहीं, पर अभी बात हो रही है तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है. नाउ आफ्टर गेटिंग दैट Z, सपोज ये सारी वैल्यूज है आपके पास, मैंने आपको सिखा दिया कैसे आइडेंटिफाई करना है. We will be having one of the Z. That Z will be known as a Z statistic. Now, using that Z statistic, we are going to accept or reject the null hypothesis. Now, अब Z की वैल्यू से let's make some of the using the value of Z, जैसे मैंने बताया उसकी फॉर्मूला कुछ ऐसी होगी, E of T divided by standard error related to T. Once we are having the value of Z, we are going to compare that Z with the Z alpha, where alpha will be a significant level and we will be having one of the critical value that will be known as a Z alpha. अब ये Z alpha हम निकालेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे एक ही बार सिर्फ. मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू आइडेंटिफाई दैट क्रिटिकल वैल्यू, एंड ये हमने फॉर्मूला से निकाला होगा. ये भी हमने एक्चुअली ये हम सीखेंगे कैसे आइडेंटिफाई करना है. बट वंस वी आर गुड विद दैट, ये इसकी तीन या चार ही वैल्यू रहेगी जो कि आप जल्दी से याद रख पाओगे. एंड वी विल गोना कंपेयर बोथ दैट. If Z is less than Z alpha, then we are going to accept the null hypothesis will be accepted. If Z is greater than that Z statistic, that critical value Z alpha, Z की value से बड़ी है, then we will straightforward reject the null hypothesis. कुछ ऐसा होने वाला है. कोई भी टेस्ट ले लो आप, हर बार एग्जैक्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू हम निकालेंगे, उसको क्रिटिकल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे. If that critical value is less than that, if that statistic value is less than the critical value, then we are going to accept the null hypothesis. अगर वो Z की वैल्यू Z alpha से बड़ी होगी, then we are going to reject the null hypothesis. So हर बार ऐसा ही होने वाला है. That will be the process which we are going to follow. तो जो क्वेश्चन था कि how we are going to reject or accept the null hypothesis, कुछ इस तरीके से होने वाला है. This is just the outline. अभी मैंने ये डिटेल में नहीं बताया. I'm going to explain कि कैसे ये करना है सब कुछ. Okay. Let me take you further. As I said that the critical value, we will be comparing Z value with the critical value Z alpha. अब वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज दे के रखी है, फिर मैं अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ कि कैसे ये सारी वैल्यूज मैंने डिसाइड की हुई है. For that we guys will be in need of a normal table. So Mohammed, are you there? Mohammed, yesterday one of the question was like that, कि sir, Yes, sir. are you attending the session properly? Yes, sir. Good. So यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, मेरे साथ रहना, ठीक है. Now, Yes. you guys are having two different options. Either you may remember this, either you have to remember this table, all these values.
specifically the 6 values only. We will be not dealing with this क्योंकि हम ज़्यादातर बात करेंगे absolute value के साथ. So either you need to remember the 6 values. You have to identify these values from the normal table. Now I will मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वैल्यूज सारी मैंने ली है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन कि ये टेबल में है क्या. फर्स्ट ऑब्जर्व द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. In this table, I am including the level of significance as well as the critical value related to that level of significance. अब होने क्या वाला है? That level of, as I said, that level of significance will be either 1% or 5% or 10%. If I'm setting my level of significance as 10%, that means I'm good if out of 100, 10 errors, we are committing 10 errors. We are good with that. By 5% level of significance, we mean that out of 100, अगर 100 बार में से 5 बार भी गलती है, error है, we are good with that. Okay, 1%, similarly for the 1%. Okay, so ये ज़्यादातर दिया होगा, पर अगर नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, then we will stick with the 5%. अब as I said earlier, for any of the hypothesis testing, usually we guys will be dealing with the normal data. If we are dealing with the normal data, that means normal distribution, then we guys are good with this particular shape. The shape of the normal distribution or the normal data, it is a bell-shaped curve. हमको पता है ये bell-shaped curve. It is purely symmetric about the mean. Okay, and the total area of this particular is always 1. And as I said, that is a symmetric. As we know that it is a symmetric, that means the area on the right hand side or left hand side, that will be 0.5. The area of this highlighted region will be 0.5. Now, if I'm setting my level of significance up to 5%, that means I'm going to allow 5 error out of 10. Then, if I'm setting my level of significance up to 10%, then I'm allowing the 10% error. 10 error out of 100 times. And similarly for the 1. Suppose I'm setting alpha as a 1%. That means what? As we know that this entire region will have the area 0.5. Now, I will be allowing 1% error out of that. That means 0.1. So I will be looking for a kind of this particular a point somewhere around here. That 1% will be subtracted from this, so that will be 1%. अगर यहाँ से subtract कर दूँ, then we will have 0.49. I'll be interested. I will be looking for 0.49, and I need to identify where the 0.49 will stand in my normal table. That particular point, normal table में 0.49 ये value कौन से point के पास आ रही है? That particular point will be my critical value Z alpha. उसको मैं बोलने वाला हूँ कि that is the value of Z alpha, and that value will be अगर 1%, then that will be 2.58. वो वैल्यू पक्का आएगी 2.58. अभी मैं आपके साथ वो वही बात करूँगा. देखिए वो नॉर्मल टेबल शेयर करके वो बात करता हूँ. Not 2.58, it will be 2.33 because I'm dealing with the single tail test. Okay, wait. Now let me present my normal table first. Just give me 1 minute. We must have the normal table. Then we may proceed with that. Normal table. That is my normal table. Just give me 1 minute. Yes, here it is. Let me share my screen.
माय स्क्रीन इज विजिबल, नॉर्मल टेबल दिखाई दे रहा है सभी को? हेलो? No, sir, it's black screen. ओके ओके ओके। Now is it visible? Yes, Hopefully sir. it should be. Yes, yes, yes. So the value which I was talking about, that was 0.49. Now let's quickly identify where the 0.49 stands for. In this particular table, we need to identify where the 0.49 value कहाँ पे आ रही है, 0.49 value कहाँ पे आ रही है, रुक जाओ एक मिनट, देखिए, from this particular, from here, ये सारा जो है यहाँ, observe this. This is 0.4901, 0.4904, 0.4906, 0.4909, and we are looking for 0.49 exact, is it? So if I'm gonna round off it up to 2 decimal place, then 0.49 will be this particular value, and this value, ये किसके लिए, देखिए एक बार, इसके लिए है ये 0.49. For that, the corresponding row is 2.3. And the corresponding column will be 0.03. Yes, here it is. So 0.03 and 2.3, if I'm going to add both that, then surely we will have the value 2.33. So that is the reason why, if I need to change my screen once again, wait, to start the PPT. That is the reason why that alpha, Z alpha, if I'm setting alpha as a 1% significant level, alpha जिसको मैं 1% significant level पे set कर रहा हूँ, 1% मानी कि 0.01, and I need to subtract that from the 0.5, and जो भी आ रहा है that is 0.49, and 0.49 वो जहाँ पे आएगा वो value थी 2.33. That is the reason that the value related to Z alpha will be 2.33. अब ये आप फिक्स भी कर सकते, ये आप याद भी रख सकते हैं, या तो फिर you can identify during the example. अगर नहीं भी याद रखनी ये वैल्यू 2.33 या फिर 1.645, ये 1.645 कैसा है वो भी अभी हम देखते हैं, 1.28 कैसा है वो भी अभी मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूँ. पर या तो आप इसको याद रखिए, ये 6 ही वैल्यू होगी, किस तरीके से सब कुछ आ रहा है मैं आपको दिखाता हूँ अभी. पर या तो आप इसको याद रखिए, या तो फिर you have to identify that level of that critical value for such level of significance. 1% के लिए आपको critical value याद होनी चाहिए, आपको 5% के लिए याद होनी चाहिए, 10% के लिए भी याद होनी चाहिए, because कोई एक वैल्यू हमको चाहिए होगी, कोई भी टेस्ट अगर हम का बात कर रहे हैं, कोई एक वैल्यू तो आपको चाहिए होगी इसमें से. पर ऐसा भी नहीं है कि हर बार लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%, 5%, 10% ही होता है. यू मे चेक फॉर द 2% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, यू मे सेट the level of significance up to 11%, you may set your level of significance as 2.5%, कुछ भी ले सकते हैं आप. But these are some of the standard values. ज्यादातर बात इसी के साथ होती है, 1%, 5% या तो 10% के साथ. तो हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उसमें इन तीनों में से एक ही आएगा. पर ऐसा नहीं है कि ये तीनों ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यू मे सेट एज 50% इवन. तो क्या करना होगा, वो 50% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के लिए आपको क्रिटिकल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. वो क्रिटिकल वैल्यू मिलेगी आपको नॉर्मल टेबल से, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द डेटा जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. इज इट? ठीक है, चलिए ये भी बता दूं कि व्हाई दैट पर्टिकुलर वैल्यू विल बी 1.645. इफ माय लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इज 5%, देन आई नीड टू subtract 0.05 from that 50%. वो जो भी आएगा उसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू आप नॉर्मल टेबल में देखें, पर we are having one of the issue. How many D2D are present over here? How many D2D students are here? Because they guys are not comfortable with the normal table even, because उसके लिए normal table वाला पहले एक बार explain करना होगा ना. D2D students कितने हैं? स्मृति एक, तू है, फिर कौन है? So I think कोई भी नहीं है मेरा. क्या बात है.
Just you are present. Okay, it's already 1:55. So what we are doing, ये अभी एक्सप्लेन ना करूँ मैं, क्या करता हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं आप लोगों का एक सेपरेट सेशन ले लूंगा D2D वाले बच्चों का, जिसमें मैं आई एम गोना एक्सप्लेन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और नॉर्मल टेबल के साथ कैसे डील करना है ये आपको सिखाना बाकी है जहाँ तक मुझे याद है. सो आप अगर उसमें कंफर्टेबल है तभी जाके आपको इसमें कुछ समझ में आएगा कि क्या बात हो रही है. एंड इट्स ऑलरेडी 1:55, सो आगे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ मैं आपको कल नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, पर उससे पहले आप लोगों का एक सेशन होगा सेपरेटली. ठीक है? Yes, sir. Wait, let me stop.